revolution, Prince State revolt होची. With the expansion of British rule in India, वृद्धि ହେଲା. Some Prince State were annexed on excuse of Prince State अधिकार କରାଗଲା. Maladministration and use of diplomacy, subsidy alliance, the Samal Sandhi and doctrine of lapse. It was boundary Chappan Awadh, Jhansi. Military revolt. There are numerous revolts by Sipahi due to interference in their social and religious practice. जो ट्राइबल्स मिलिटरी मैंने सामाजिक और रिलीजियस प्रैक्टिस इंटरफेरेंस कले कि प्रवेश कले डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विभेद दे मीन कंपैरिजन टू देयर यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन काउंटरपार्ट सहित दे आर ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन बैच विभेद अगेंस्ट देम इन कंपैरिजन टू द यूरोपियन काउंटरपार्ट्स. Those revolts include Vellore mutiny, mutiny of the Sepoy in Bengal, and Barakpur mutiny. 24 होची Vellore mutiny, 1764 होची Bengal Barakpur mutiny. 24. Apart from these certain deposed, the rulers and the Jamindars also revolt against the British. Rulers of Jamindar. All the localized movement which lacked efficient leaderships. Localized movement which lack efficient leaderships. Neta. And Jamindar also revolt against the British. All the localized movement which lack of efficient leadership, efficient leader नथिले, prominent leader, crucial leader, but just backward ideology, पछघुंचा ideology were suppressed by British suppressed कले. But this rebellion finally culminated in revolt of 1857. अब 1857 revolution. Linkage between the 19th century Indian Renaissance, 19th century होची 19th century Renaissance जो भी संस्कार परिवर्तन and the emergence of national identity, national जातीय identity. Renaissance refers to transition of European society. Renaissance थिला refers to transition of European society, European समाज with respect to cultural, artistic, political and economic sphere. माने सांस्कृतिक, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर, राजनैतिक अर्थनैतिक स्फीयर माने मंडल ऑफ लाइफ इन बिटवीन 14th century to 17th century, 14 सेंचुरी रु 17 सेंचुरी मध्य. Renaissance marked the transition from a middle age to modern age. Renaissance was also cultural, intellectual, बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, artistic movement. During artistic माने कारुकार्य during British period समय in the early 1920th century the inspiration for Indian Renaissance emanates from idea of humanism. माने idea of humanism, मानववाद. Transition of European society with respect to cultural European society Indian Renaissance परिवर्तन होला respect to cultural, artistic, political, economic sphere of life रे जीवन अर्थनैतिक परिधि. 14th century to 17th century Renaissance marked middle age to modern age. 14 ରୁ 17 मध्य युग ରୁ आधुनिक युग. The Renaissance during the 19th century can be categorized into two phases. Socio-religious movement. Second phase is anti-colonial politics and social quest for modernity.
प्रथम पेज होची सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। सेकेंड होची एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स एंड सोशल और मॉडर्निटी आधुनिकता पई। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशंस होची डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ यूनिटी एकता एंड कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी एकता एवं कॉमन नेशनल आइडेंटिटी जातीय। फर्स्ट फेज मार्क्ड द इंक्वायरी इनटू आवर पास्ट revivalist among the opponents of a socio-religious movement. Revivalist inspire the masses to inspire करछ masses को जनता मानक to take a pride in our ancient past अतीत रे since first page mark the inquiry into our past. First page mark kala inquiry into our past. Revivalist among the proponents of social religious movement inspire the masses to take pride in our ancient past. Sense of pride inculcated a feeling of a common national identity which had its roots in the commonality. चेरोटा कल्चर और ट्रेडिशन परंपरा फिलोसफी एंड यूनिवर्सलिज्म among different section of society विश्ववाद among different section society विभिन्न section the role of राजारामन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर नारायण गुरु and other social religious leader such as Dayananda Saraswati, Swami Vivekananda among many others form the basis for this phase. Vidyashagar Narayan Guru, other social religious leader, अन्य सामाजिक धार्मिक लीडर दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद. The second phase of characterized by the phase of is characterized by attempt to bring together anti-colonial politics, colony विरुद्ध and social quest for modernity ପାଇଁ आधुनिकता ପାଇଁ. National movement allowed कला values of first phase of the Renaissance. प्रथम फेज टू फॉर्म देयर आइडियोलॉजिकल पोस्चर तैयारी कला आइडियोलॉजिकल पोस्चर भावभंगी और एंटर एरियाज वेयर दे वर कॉन्स्पिशियस बाय देयर एब्सेंस अनुपस्थिति द्वारा. नेशनल मूवमेंट केप्ट द स्ट्रगल ऑन सोशल इश्यू सोशल में सामाजिक इश्यू आउटसाइड द पॉलिटिकल एजेंडा control it through major intervention. The role of Gandhiji major intervention कले role of Gandhiji and other nationalist movement leaders Tilak Mallavya Lajpat Rai was commendable in this regard. प्रशंसनीय. There is say that revivalist approach of earlier reformers माने एलियर जो रिफॉर्मर सब थे इन परिवर्तक टुगेदर विथ द रोल प्लेड बाय लैटर नेशनलिस्ट लीडर्स द्वारा लीडर्स ड्रिवन बाय इंडियन रिनेसांस को ड्राइव कले लेड इनटू एमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी मध्य अबोध होला जातीय आइडेंटिटी. Impact of global warming on coral reef system with examples. GS1 2019
ग्लोबल वार्मिंगटा कोराल रीफ्स को अफेक्ट करछि। एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग इज द irreversible scale rise of temperature वृद्धि पाइला from pre-industrial level. This rise of temperature is the greatest global threat. टेम्परेचर वृद्धि है ग्रेटेस्ट ग्लोबल थ्रेट। वैश्विक थ्रेट अर्थ हो जो कोराल रीफ इकोसिस्टम थ्रेट टू कोराल रीफ। कोराल मान हो जो समुद्र प्रबल। rise of temperature of the greatest global threat to coral reefs. Scientific evidence indicates that earth atmosphere and ocean are warming बढ़ुअछि। These changes are primarily due to greenhouse gas जोगु derived from human activities रो मनुष्यर जोगु बाहरुछि human activities जोगु। The temperature rise mass coral bleaching होछि कोराल जो प्रबल ब्लीचिंग होची इवेंट्स एंड इन्फेक्शस डिजीज होची आउटब्रेक्स बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट बारंबार फ्रिक्वेंट हेलानी। इन्फेक्शस डिजीज होची ओशन एसिडिफिकेशन होची इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ुची अब्जॉर्ब होइथिबो इनटू ओशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रू रिड्यूस कमी दोची कैल्सिफिकेशन रेट। कैल्सिफिकेशन रेटा कमी जाउची इन रीफ्स बिल्डिंग एंड रीफ एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन बाय अल्टरिंग सी वाटर केमिस्ट्री थ्रू डिक्रीज इन पीएच कमी जाउची। ओशन एसिडिफिकेशन होची इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ुची एब्जॉर्ब इनटू द ओशन एब्जॉर्ब होची ओशन रे फ्रॉम द डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होची इनटू द ओशन रे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू रिड्यूस कैल्सिफिकेशन कमी जाउची कैल्सिफिकेशन रेट्स इन द रीफ बिल्डिंग। वार्मिंग होची लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम थ्रू चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म जोगु क्रांतीय स्रोत जोगु सी वाटर केमिस्ट्री थ्रू डिक्रीज पीएच टा कमी जाउची H+ कमी जाउची तेणु एसिडिफिकेशन H+ एसिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व होची इनटू ओशन रे एटमॉस्फेयर रिड्यूस कमी जाउची कैल्सिफिकेशन रेट इन रीफ बिल्डिंग रीफ तैयार करिया पे कैल्सिफिकेशन रेट कमी जाउची ना चिन्हटा होची कोन बेस रीफ एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म रीफ रो एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म बाय अल्टरिंग सी वाटर केमिस्ट्री थ्रू डिक्रीज पीएच कमी जाउची पीएच कमी गले कोन एसिडिफिकेशन हो। ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम नष्ट कर दोची। ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू सी लेवल राइज वृद्धि करची व्हिच इंक्रीज द सेडिमेंटेशन फॉर रीफ्स स्तरीभूत होची लोकेटेड नियर लैंड वेस्ट लोकेटेड हुई लैंड पाखरे वेस्ट सोर्सेस ऑफ सेडिमेंट्स रन ऑफ कैन लीड टू चोकिंग ऑफ कोरल्स चोक हो जाउची फर्दर सी लेवल राइज इंक्रीज ऑप्टिमम डेप्थ हो जाउची गभीर ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ माने कॉन्टिनेंट नियर कॉन्टिनेंट कोरल रीफ्स ऑब्टेन्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ रिक्वायर करे फॉर ग्रोथ बाय एंड सस्टेनेंस ऑफ कोरल्स शेप बाय सस्टेनेबल दिस हैम्पर्स देयर ग्रोथ तंगर ग्रोथ हैम्पर हो जाउची। ग्लोबल वार्मिंग जो रैपिडली डेप्थ ऑफ द सी बढ़ुची। ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू अल्टर द ओशन सर्कुलेशन changes in connectivity and temperature regimes that contribute to lack of food खाद्य अभाव घटुची for corals and hampers dispersal of coral larvae contribute to lack of food
ଖାଦ୍ୟ lack of food ଅଭାବ ହେଉଛି for corals and hampers dispersal of coral larva. Global warming list increase ଯୋଗୁଁ regimes lack of food ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ for corals ପାଇଁ and hampers dispersal of coral larva. coral larvaଟା disperse ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି. Great barrier reef ହେଉଛି under Great barrier reef under threat due to the global warming ଯୋଗୁଁ. According to Australian government, Great Barrier Reef Marine Park Authority, Great Barrier Reef is under threat due to global warming ଯୋଗୁଁ. Other major environment pressure that are harmful କ୍ଷତିକାରକ for coral reef ପାଇଁ includes decrease water quality from land waste runoff. water quality decrease ହେଇଯାଉଛି. impacts from coastal development. Other coral reefs such as the Amazon reef, Miami Terrace reef under threat due to the environmental pressure ଯୋଗୁଁ and rising global temperature ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି. impact ହେଉଛି global ଯେଉଁ coral reef coastal development जो ହେଉଛି some persistent impacts from fishing activities ପାଇଁ. This reef is also threatened by storms, ସ୍ରୋତ ଝଡ଼, coral bleaching ଯୋଗୁଁ and ocean acidification ଯୋଗୁଁ bleaching ହେଉଛି which has arose due to adverse impact of ପ୍ରତିକୂଳ impact of global warming on coral reef necessitates immediate action. Immediate ମାନେ ହଠାତ୍ action. The need of our is shrink the carbon footprint. Carbon footprint ଟା କମି ଯାଉଛି by reducing the emission of greenhouse gas emission ଯୋଗୁଁ. carbon footprint ଟା କମି ଯାଉଛି. carbon calcification and to facilitate action plan so as to improve overall coral reef condition. coral reef condition ଯୋଗୁଁ. 2019 UPSC Mains GS1 Sir question answer solution. Discuss the causes of depletion mangroves केमती depletion होची and explain their importance in maintaining coastal ecology. Discuss the causes of depletion of mangrove केमती depletion होची coastal ecology रो. A mangrove is a shrub of a small tree छोटा गच्छ that grows in coastal saline brackish water रे. coastal जो saline लुणिया और brackish water खारिया. The term is also used to tropical coastal vegetation. क्रांतीय coastal vegetation consisting of such species. Mangroves occur worldwide in the tropics. Mangrove tropics and subtropics क्रांतीय उपक्रांतीय रे. Mainly between latitude 25 north to 25 south. Tropical mangrove occurs. Subtropics रे क्रांतीय मध्य हुए. Small tree that grows coastal saline brackish water रे. Cause for depletion. Causes of depletion mangrove काहेकि clearing of mangrove forest have often been seen as unproductive and smelly, so people cleared them for making space. Clear करती for agriculture land ପାଇଁ, human settlement ପାଇଁ, मनुष्य ରହିବ infrastructure such as industrial areas ପାଇଁ. Unproductive, smelly. ଅଦରକାରୀ. Diversion of river water. Dams and irrigation reduce the amount of water. Dam और irrigation जलसेच ପାଇଁ. Reaching mangrove forest. Reduce amount of water और कमी जाए amount of water पानी. Reaching mangrove forest पहुंचे ପାଇଁ. Changing the salinity level of water in the forest. Change हुई salinity level लूण परिमाण. Over harvesting mangroves.
Mangrove trees are used for firewood ପାଇଁ ଜାଳେଣି construction wood chip ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯିବ pulp production ମଣ୍ଡ ଯେଉଁ କାଗଜ ମଣ୍ଡ charcoal production କୋଇଲା animal fodder animal ଖାଦ୍ୟ overfishing leads to reduction animal diversity animal ର ଯେଉଁ diversity ବିବିଧତା in mangrove forestry which has potential coastal ecology overfishing leads to reduction of animal diversity mangrove forest which has potential to further disturb होची coastal ecology टा animal diversity और mangrove forest destruction of coral reefs provide the first barrier against प्रतिबंधक against current first barrier against the current strong waves तरंग आसे loss of coral reefs exposes the mangrove coral reefs टा जो होची प्रथम प्रोवाइड करे लास्ट बैरियर coral reefs loss हो जाए exposes mangroves to recurrent sea waves को फेस करिया current sea और waves से which ultimately lead to their depletion कमी जाउची pollution fertilizer pesticide and other toxic man-made chemicals carried by the river जो बही के आने man-made chemicals toxic pesticide systems river system from sources upstream ऊपर जो पांटा आसे by the river carried by the river can kill animals living in mangrove forest रे रहंती पहले oil pollution can smoother mangrove roots oil polluted करे mangrove को and suffocate the trees गछ को suffocate करे जो माने suffocation माने होची अनिश्वासी करियो गोटा oil pollution can smoother mangrove roots चरु को importance mangrove होची mangrove importance for maintenance of coastal ecology परिसंस्था coastal protection dense root system of mangrove forest trap करे sediments flowing बहे down rivers and up the land coastal protection करिया करे fishery livelihood जीविका maintaining water quality की carbon sequestration को serve as habitat mangrove are home to number of species बहुत species रो protection होची dense root system of mangrove forest trap करूची flowing down rivers तळगु बहे of land preventing coastal erosion माने coastal जो क्षय को रक्षा प्रतिरोध करे mangrove protect करे जो coastal area from the recurrent sea mangrove forest are home to large variety of fish carp conchorda shrimp and mollusks livelihood माने जीवन जीविका fisheries and farmers belonging to the rural communities depend on their natural environment परिवेश ऊपर which comprise of mangroves mangrove provide ecological service दिए for their families परिसंस्था maintaining water quality mangroves are essential for maintaining water quality की maintain करे with dense network of root ता जो root टा dense motor network surrounding vegetation they filter and trap sediment filter करे water को carbon sequestration mangrove sequester carbon at a rate 2 to 4 times greater than mature tropical forest mature हिथो tropical forest जो क्रांतीय forest है mangrove sequester carbon को carbon sequestration करे 4 टाइम 2 greater than a mature tropical forest mature क्रांतीय forest ठारू carbon sequestration rate बढ़ी जाए mangrove are home to number of species रो 2019 मेंस GS1 Upsc regional resources based
मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कैन द स्ट्रैटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्सेस आंचलिक जो उत्स अच्छी बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आंचलिक उत्स उपर जो मैन्युफैक्चर होची हेल्पिंग प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इंडिया रे हेल्प रे सहायता करूची। रीजनल रिसोर्सेस होची बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स सर्व्स एज इंडस्ट्रियल clusters which are based across the length and width of the nation। लाघ्यवस्था हबे मैन्युफैक्चरिंग हब टा। रीजनल रिसोर्सेस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू डेवलपिंग इंडस्ट्री को डेवलप होची which utilizes locally available resources अच्छी रीजनल इंडस्ट्री यूटिलाइज करुची लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तेणु रीजनल इंडस्ट्रीज मैंने यूज करती लोकली अवेलेबल होता रिसोर्सेस उत्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जिनस। सम ऑफ द रीजनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड देयर रोल